welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Kartik Aaryan refutes the news of him hiking his fees. Ranbir Kapoor gets a warm welcome as he visits Visakhapatnam. Sidhu Moosewala's video with Big Boss 15's Afsana Khan goes viral. कार्तिक आर्यन ने अपनी फीस हाइक की न्यूज को बताया बेसलेस. कार्तिक आर्यन ने नहीं बढ़ाई अपनी फीस. कार्तिक आर्यन ने कहा, प्रमोशन हुआ है लाइफ में, इंक्रीमेंट नहीं. कार्तिक आर्यन ने अपनी फीस हाइक की रिपोर्ट्स पर किया रिएक्ट. क्या वाकई भूल भुलैया 2 एक्टर ने फिल्म की सक्सेस के बाद अपनी फीस कर दी डबल? रिसेंटली कार्तिक आर्यन को लेकर ऐसी न्यूज थी कि उन्होंने अपनी फीस को बढ़ाकर 35 to 40 करोड़ रुपीस पर मूवी कर दिया है, जिसके बाद कहा गया था कि ऐसा कार्तिक आर्यन ने अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म की सक्सेस रेट को देखते हुए किया है. दरअसल 20 मई 2022 को रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल दिखाते हुए सिर्फ 9 दिनों में ही 100 करोड़ का बिजनेस किया और इस तरह से ये इस साल की 3rd फिल्म बन गई जिसने इस टाइम में 100 करोड़ क्लब में एंट्री की है. ऐसे में कार्तिक आर्यन फिल्म की सफलता से बेहद खुश हैं और शायद इसलिए कार्तिक आर्यन की फीस हाइक की खबरों को भी हवा मिली. लेकिन फाइनली अब कार्तिक आर्यन ने इस तरह की न्यूज को बेसलेस बताते हुए साफ कर दिया है कि उन्होंने अपनी फीस नहीं बढ़ाई है. कार्तिक आर्यन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, प्रमोशन हुआ है लाइफ में, इंक्रीमेंट नहीं, बेसलेस. हालांकि reacting to this reply, a fan wrote in the comments, "There's no harm in getting an increment. You did a fantastic job. You deserve it." खैर, कार्तिक आर्यन के इस पोस्ट से साफ हो जाता है कि वो अब भी फिल्म के लिए उतना ही अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जितना वो भूल भुलैया 2 के हिट होने से पहले चार्ज किया करते हैं. बता दें, कार्तिक आर्यन के साथ इस फिल्म में कियारा आडवाणी और तब्बू भी पिवटल रोल्स में थी और सभी फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. वैसे मूविंग ऑन टू कार्तिक आर्यन्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, तो ही विल नेक्स्ट स्टार इन अ रीमेक ऑफ द 2020 तेलुगु फिल्म आला वैकुंठा पुरामलू टाइटल्ड शहजादा, व्हिच आल्सो स्टार्स कृति सैनन इन द लीड. इसके साथ उनके पास एक एक्शन ड्रामा फिल्म भी है. नेक्स्ट ही विल फीचर इन शशांक घोष's रोमांटिक थ्रिलर फिल्म फ्रेडी विद अलाया F. Apart from this, Kartik Aaryan also has Sajid Nadiadwala produced romance Satyanarayan Ki Katha and will also collaborate with Hansal Mehta in the social drama Captain India. रणबीर कपूर को विशाखापट्टनम में अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करते किया गया स्पॉट. ब्रह्मास्त्र से पहले रणबीर कपूर आलिया भट्ट एक एड फिल्म में आएंगे नजर. इस एड फिल्म के सेट से रणबीर कपूर आलिया भट्ट की पिक्चर्स हुई वायरल. रणबीर कपूर ने शुरू किया अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन. देखिए विशाखापट्टनम में स्पॉट किए गए रणबीर कपूर का कितना ग्रैंड अंदाज में वेलकम किया गया. यहाँ रणबीर कपूर को कुछ इस अंदाज में एक बड़ा सा फूलों का गार्लैंड पहनाया गया.
रणबीर कपूर के फैंस उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र का ईगरली वेट कर रहे हैं, जिसमें आलिया भट्ट उनके साथ नजर आएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ न्यूली वेड्स रणबीर कपूर आलिया भट्ट का फिल्म से पहले एक एड शूट में साथ आकर अपने फैंस को सरप्राइज करने का प्लान है। वैसे तो दोनों पहले भी कई एड फिल्म्स में साथ नजर आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये शादी के बाद दोनों की पहली एड फिल्म है, जिसके लिए रिसेंटली दे जॉइंड हैंड्स टुगेदर, इसलिए भी ये दोनों के लिए बेहद खास है। बता दें, रणबीर कपूर आलिया भट्ट ने ये एड फिल्म एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए शूट की है और सेट से जिसके कुछ स्नैप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, while in one picture the two are standing back to back in bright clothes with one arm out in front. In another, Ranbir Kapoor is leaning on a table looking at Alia Bhatt as she squats on the ground. In a few other snaps, the lovebirds are twinning in white. Well, we must say, एड शूट के सेट से सामने आई रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ये पिक्चर्स देख उनके फैंस बेहद खुश होंगे। आफ्टर ऑल, ना जाने कब से फैंस दोनों को ब्रह्मास्त्र में साथ देखना चाहते हैं, लेकिन 11 साल से बन रही ये फिल्म किसी न किसी वजह से डिले होती रही और फिर इसी फिल्म के सेट्स पर रणबीर कपूर आलिया भट्ट को एक दूसरे से प्यार भी हो गया और अब तो दोनों लाइफ पार्टनर्स भी बन गए हैं। ये भी एक वजह है जो रणबीर कपूर आलिया भट्ट के फैंस दोनों की इस सुपर हीरो फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट फाइनली 9 सितंबर 2022 को रिलीज होगा। लेकिन उससे पहले फैंस रणबीर कपूर आलिया भट्ट की क्यूट केमिस्ट्री को इस एड शूट में एंजॉय कर सकते हैं। लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का थ्रोबैक वीडियो हुआ वायरल। अफसाना खान की वेडिंग का वीडियो हुआ वायरल। लेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला का थ्रोबैक वीडियो देखकर फैंस हुए इमोशनल। लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सिद्धू मूसेवाला की सोल सिस्टर अफसाना खान की शादी का है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला अफसाना खान के साथ हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, earlier this year, Afsana Khan tied the knot with Saaz Khan in a grand ceremony in Chandigarh. Sidhu Moosewala had attended her wedding celebrations to extend his warm wishes to the newly married couple. सिद्धू मूसेवाला की सडन डिमाइस से उनके फैंस और सेलेब्स सभी दुख में हैं। उनकी मौत के 2 दिन बाद भी लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल है कि सिद्धू मूसेवाला अब नहीं रहे। उनकी डेथ पर बॉलीवुड सेलेब्स कपिल शर्मा, अजय देवगन, रणवीर सिंह, विकी कौशल, कंगना रनौत ने भी अपना दुख जताया। वहीं पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अफसाना खान, शहनाज गिल, हिमांशी खुराना, दिलजीत दोसांझ also condoled the death of the artist. अपने सोल ब्रदर सिद्धू मूसेवाला को खोने के बाद अफसाना खान also shared a post on her Instagram story. She penned a note in Punjabi which translated to, "God, please return my brother." सिद्धू मूसेवाला के लास्ट राइट्स उनके नेटिव विलेज मूसे में किए जाएंगे। आपको बता दें, a 5-member forensic team of doctors conducted his postmortem, and according to Sidhu Moosewala's autopsy report, 25 entry and exit bullet wounds were found on his body. रिसेंटली काजोल को उनके किड्स युग और नीसा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर पैप्स ने क्लिक किया, जहां आप देख सकते हैं काजोल कैसे अपने किड्स को गाइड कर रही हैं। इन अ वीडियो, काजोल्स younger son Yug looked sleepy as she adorably hugged him after stepping outside the luxurious car. Nisa Devgan meanwhile made sure to make a stylish appearance with her mom and brother, where Nisa Devgan paired a comfy top with denim. However, the cost of her jeans will leave you pleasantly surprised, क्योंकि super expensive outfits को छोड़कर Nisa Devgan chose a pair of jeans that cost ₹5,500.
लाल सिंह चड्ढा के साथ आमिर खान पूरे 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन्स पर अपनी वापसी कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन को लेकर आमिर खान लगातार न्यूज में बने हैं। रिसेंटली फिल्म के पहले ट्रेलर लॉन्च के बाद अब खबर है कि आमिर खान फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के चलते कुछ और ट्रेलर्स लॉन्च करेंगे। A source close to the development revealed Amir and his team have designed a campaign that unfolds bits and pieces from the world of the film at regular intervals. While the first trailer was launched 2.5 months prior to release, Amir is already working to launch some more assets in the time to come. While a trailer 2 is sure to be out closer to the releases, there will be many more videos which might serve as mini trailers. प्रियंका चोपड़ा भले ही हॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स की लिस्ट में शामिल है, but she's still a desi girl at heart, and her new Instagram story is proof of that. The actress, who was at her LA home for the Memorial Day weekend, shared a story on her Instagram that consisted of the gorgeous view from her home and a Bollywood song playing in the background. इस स्टोरी को शेयर करते हुए पीसी ने ये भी क्वेश्चन किया, Why wasn't I invited? क्या भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार की हाउसफुल फ्रेंचाइज में भी आएंगे नजर? According to reports, Kartik Aaryan will be headlining the next installment of the Housefull franchise. हालांकि अब तक इस मल्टी स्टारर फ्रेंचाइज के 4 पार्ट्स सामने आ चुके हैं और इन सभी में अक्की कांस्टेंट रहे हैं। वैसे इस खबर की अब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बता दें, भूल भुलैया की सेकंड इंस्टॉलमेंट में कार्तिक आर्यन अक्की के कैरेक्टर में थे और ऑडियंस को कार्तिक आर्यन का ये अंदाज काफी पसंद भी आया है। जिस तरह शाहरुख खान की पठान में सलमान खान को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं, ठीक उसी तरह सलमान खान की टाइगर 3 में शाहरुख खान की स्क्रीन स्पेस को लेकर भी फैंस सुपर एक्साइटेड हैं, जिसके लिए शाहरुख खान जल्द ही शूट करने वाले थे। लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान को सलमान खान की फिल्म के शूट को कुछ महीनों तक डिले करना पड़ा है और इसकी वजह है राजकुमार हिरानी की डंकी के लिए लिया गया उनका लुक, जिसकी वो फिलहाल शूटिंग कर रहे हैं और कुछ समय तक वो अपने इसी लुक को स्पॉट करेंगे। एक सोर्स की माने तो इट विल take about 2 months before SRK joins Salman Khan on the sets of Tiger 3. Shah Rukh is presently shooting for Donkey with an all-new look and will then shoot for Atlee's film. And only after that will he join Salman for his special appearance in Tiger 3. Coming up on the show, Kamal Hassan ने किया Zoom के साथ exclusively interact. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is a very talented actor. The superstar has been fearless with his choices on and off screen. Talking about the revered Mr. Kamal Hassan. Welcome to the show, sir. Thank you. You know, it's been a while. I remember you had once said that, you know, if my idol Mr. Mahatma Gandhi at the age of 78, if he can try to stop corruption, why can't I at the age of 60? It's been some time since that quote. I want to know how same or different do you feel, and how has that journey been, because you have been at your own end, right? The journey is not done only with others. Sure. It starts with yourself. Yeah. So when you can set an example, then you can ask others to do the same. At least by proving the point that it is possible. I think I don't call him Mahatma. I always call him Gandhiji, like I would call my dad or my granddad. Because I think Gandhi is imitable. He is not inimitable. He is imitable, but you must have the guts and the tenacity and the grey matter to do it. Even if it is satyagraha, you'll have to do it individually first and then collect your friends. You said that Vikram, you're very confident that it's going to stay in the mind of people for many, many years. And I think that's a very confident statement to make, because you believe in what you've done. Tell us why. It doesn't apply only for Vikram. Any film I make, I usually use the slipper analogy or comparison. Whatever product I make should last and live its lifetime. So it shouldn't vanish. It's not use and throw. Use, continue to use and gain something from it and make them come back for similar kind of products. So any business would thrive with that kind of attitude and philosophy. Mine is that. So is it disappointing when you have people, you know, example the entire Ondriyam controversy with Vikram, where they said the word means for something else? Even if I
if it means what they mean. This country must have that voice to say what they have to say. The central government is the central government, irrespective of the party. Absolutely. If it is the Congress, if it's the BJP or some other party which is ruling there, the people must have the right to correct it or question it, Absolutely. if nothing else. So that is what I was promised in 1947 and again in 1950 by the President of India. That cannot be taken away from me. Then it's another country I'm living in. Do you feel that it is important that we continue to do that in films, being a huge medium as well? Yes, it's my language. If you speak in Hindi, you speak in Bengali, you speak in Marathi, I speak through cinema. Yeah. That's my language. And I will say what I have to say about my people. I have a duty. I cannot say I'm an artist, so I'm like water on a lotus leaf. I'm part of the pond, not of the leaf. Then don't ever come near the leaf. You mentioned Hindi, Bengali, Tamil. You worked in all of these industries actually. So for someone like that who's truly in the sense always believe that language can never be a barrier, it's a unifying factor, our diversity is our win. How did you look at when made the statement about Hindi not being the national, Hindi is not our national language, everything is, all the languages are equal in that way? Like there can be taller actors and shorter actors like me. Let me take Amit ji because he's a friend and I can talk about him. Yeah. He cannot say, I'm the biggest actor because I'm the tallest. He will never say that. Yeah. He will give equal preference to a Nasruddin Shah, a Nawazuddin, who came according to him. It's only yesterday he came. But he'll give him that space. And he'll say, he's my peer. He will never say, he's my lesser peer. I would never say that. Absolutely. Just because it's a new actor, I would never say I might say new just to define the time he has spent in the time, but you cannot belittle them because he has his own pride and he might be tomorrow's big actor. A language is far more ingrained in a person. It's part of his culture. It's bigger than community sometimes. So you cannot belittle any language. Yeah. So whenever I say, are you saying down Hindi, like in the 60s when they politically said that? No, I'm saying long live Tamil and let live. That's all. And that's how it should be. And I'm so proud. I don't even question why the national anthem is not there in my language. I don't understand that language. I don't speak it every day. But with great pride, I sing it. Every Tamilian knows that. Yes, he might mispronounce it here and there. We do it to English, we do it to Hindi. But we love those things. Some of the songs in Hindi used to be such a big hit in Tamil. And we were singing it with gibberish. It's not Hindi actually. It's something sounding like it because we didn't know the language. But there's love for the language. Love for the tune. It came. That's how it's done. Sports and art is the only thing that can make anyone feel at home and like one family. I think we'll have to let our male egos go and not fight about what we want to create something like this. It took a while to get two big stars in a film. It's extremely expensive, and maybe we are to be blamed for it. Now, here's the question that I want to ask you. It was super exciting to see the three most powerful actors of the country come together. I was excited. I think entire internet blew up because of that. It had you, it had Vijay Sethupathi, it had Fawwa. If you've seen the work of the artists, you will be rejoicing to see you all come together. But it took a while to come here. Do you think there is a lot that goes into getting the biggest superstars, even like if you see thousands films? I'll tell you where we learned that, where we got the same excitement that you're talking about. Yeah. I've seen that when Prithviraj Kapoor ji and Dilip Kumar Saab and K. Asif came together. Yeah. We thought it'll never be possible again. And then we saw it happen in Sholay.
when Sanjay Kumar Saab acted with two superstars of that time, Dharamji and Amirji. And it was not only that, there were lady superstars in the film. It was astounding. And what we decided when we saw the film, first, we hated it so much. Because it's so good, we said, so what? You give me money, I'll do a film like that. Then we thought about it. Money doesn't make these things happen. How do you bring all these people together? My respect for Ramesh grew, and I had the honor of working with him.